का प्रोफेशनल लेवल जो है वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें भी आइल्स की राइटिंग. सो आइल्स की जो राइटिंग है वो कैसी होती है, लेट्स स्टार्ट टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम इंट्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, द आइल्स राइटिंग टेस्ट हैज टू पार्ट्स. और टास्क आज के जो आइल्स के जो राइटिंग टेस्ट है इसके दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज इन द फॉर्म is an information transfer task. This means you need to take information from a table, chart or a diagram and present it in the form of a short written description. The second part is the discussive composition. For this task you are given a statement or an opinion about something and you must present your views. दूसरा पार्ट जो होता है उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और उस स्टेटमेंट के ऊपर आपने अपने व्यूज देने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The whole test takes an hour, but you will need more time for task 2 than task 1 because you have to write more words and it is worth more point. The test is organized like this. For example, जो टेस्ट है वो 1 घंटे का होता है और जो टास्क 2 है टेस्ट में वो टास्क 1 से ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा लिखने हैं और उसकी वर्थ भी ज़्यादा है. और द टेस्ट इज ऑर्गेनाइज लाइक दिस. इस तरह से टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टास्क 1 एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टास्क है और it continues for 20 minutes and you can write minimum 150 words. If you talk about the task 2 is discussive composition, 250 and 40 minutes. So task 1 एक information transfer task है जिसमें आपको 20 मिनट मिलते हैं और आपने 150 words लिखने हैं, जबकि task 2 में आपको 40 minutes मिलते हैं और आपने एक discussive composition लिखनी है. What is discussive composition, ये मैं बताऊंगा. आज के जो लेसन होगा इसको कहेंगे हम फर्स्ट लेसन और इसमें हम सीखेंगे we'll learn about the different kinds of writing you may be asked to do in the test. Practice reading and understanding tables, look at information, look at different ways of expressing numbers, practice brainstorm ideas for compositions and revise language for expressions, purpose, cause and effect. Then look at ways of writing problem and solution type compositions. ये वो सारे आज के तमाम टास्क हैं जो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो we'll learn about the different kinds of writing you may be asked to do in the test. आज के जो लेक्चर है इसमें हम वो तमाम किस्में जो आपको से पूछी जाएंगी आइल्स के राइटिंग टास्क के हवाले से वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. मजीद के प्रैक्टिस रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेबल्स के टेबल को पढ़ना कैसे है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो टेबल को पढ़ना नहीं जानते, वो उन्हें समझ नहीं आती कि किस वैल्यू से इसको स्टार्ट करना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है. लुक एट डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स एंड विल लर्न ऑल्सो कि कैसे डिफरेंट नंबर्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे. विल प्रैक्टिस brainstorming ideas for compositions. अब दिमाग में आइडियाज कैसे आएंगे, वो जो कंपोजिशन हमने आइल्स की लिखनी है उसके लिए आज हम साथ ये भी सीखेंगे. विल रिवाइज लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन पर्पस, कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से हम लैंग्वेज को भी रिवाइज करने जा रहे हैं. एंड विल look at ways of writing problems and solution type compositions. So problem और solution type composition भी हम देखेंगे. So activity 1 हमारे सामने इस वक्त मौजूद है. तो activity 1 जो है the IELTS writing test, types of writing, 5 minutes में हम इसे complete करने की कोशिश करेंगे. मेरे डायल पर इस वक्त है 3:14 और हम कोशिश करेंगे कि इसको 5 मिनट में complete करें. तो आपने हमारा साथ देना. Below is a list of types of writing you have to do in IELTS test. Over here you have to do in IELTS test. Sort the list into the writing for task 1 and writing for task 2. यहाँ नीचे ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू में नजर आ रहा है आपको, ये कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं. हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देखना है कि क्वेश्चन जो टास्क 1 है उसमें इनमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे और व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी देयर इन द डिस्कर्सिव कंपोजिशन ऑफ टास्क 2 और टास्क 1 में कौन से हैं और टास्क 2 में कौन से हैं. वी गोना गो. नंबर 1, अब आपने ध्यान करना है कंपेयर एंड कंट्रास्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू.
कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने हैं पॉइंट्स ऑफ व्यू पे। तो टास्क 1 तो कहलाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और टास्क 2 है डिस्कर्सिव कंपोजिशन। Then if he will give you the points of view, he will demand a point of view and he will give you some idea that you have to compare and contrast this idea. Then we have to write that over the discursive composition. It will be in the second part over here. So the second is describe an object or a system. So this goes to the information transfer, because over there they will explain some object or the system and you have to write that thing in your notebook. So you have to understand that information and you have to write that information on the notebook in the task 1. So this is actually the time for the task 1. And we're going to go. The evaluate and challenge ideas or an argument. You have to evaluate the ideas and you have to challenge the argument, and what is the argument they have given, and you have to put your own argument about that particular idea. So what do is, अब हमें करना ये है evaluate and challenge ideas or an argument. किसी idea को evaluate करना है या उसको फिर idea को challenge करना है. For example के जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बेहतर है या फिर सोलर एनर्जी बेहतर है, तो वो चैलेंज करता है कि सोलर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से बेहतर है, या वो कहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज बेटर देन सोलर एनर्जी। तो फिर हमें देन वी हैव टू चैलेंज द कमेंट एंड वी हैव टू गिव द आर्गुमेंट्स अबाउट दैट, और ये टाइप बनती है डिस्कर्सिव कंपोजिशन। सो इट विल बी इन टास्क 2। Now let's discuss explain how something works. So if we have to explain how the particular product or the particular machine is working, then we have to think that this must be the information type of the task. So it will be in the task 1, information transfer. So now justify an opinion. If you are over there to justify the opinion for something, then in order to justify the opinion, you have to think that this should be in the discursive composition. It is a part of task 2. And now organize, present and compare data. Let's talk about the data here. Whenever there is data, it means it is the task 1, the information transfer. Now let's describe the stages of a process. So for us, the stages of the process is also in the task 1. जब भी कोई process आपको नजर आता है, उसकी stage नजर आती है और आपने वो explain करनी है, तो ये task 2 में कभी नहीं होता, ये task 1 में आता है। तो you must be very very much familiar and be confident this is the question about the task 1. So present a solution to a problem. If this type of the question is being asked that you have to present a solution about a particular problem, then what is? So if you are going to explain the solution of a problem, then keep in mind that this is the essay. It is a discursive composition, so it will be in the task 2. The last is present evidence to support an opinion. If you are really there and are going to present an evidence, then you are supporting an opinion. It means that it will be also there in the discursive composition. So let's move ahead. So we have completed that in 5 minutes. We have started that in, look at the dial, we have started that in 3:14 and now it is 3:19 on the dial. Let's move. So it is British Council, Learn English Professionals. We'll discuss the tables now. Very very important, बहुत अहम है tables। ये समझ ही नहीं आती है बच्चों को। मैंने अपने इस कैरियर में जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव सीन कि टेबल जब आता है स्टूडेंट के सामने तो उसे पता नहीं चलता कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे एक्सप्लेन कहाँ से करना है, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की भरमार होती है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आज आपकी ये कन्फ्यूजन तो हम दूर करना चाह रहे हैं। आपने तवज्जो से हमारे साथ रहना है ताकि आपको समझ भी आ सके। तो एक्टिविटी 2, अंडरस्टैंडिंग टेबल्स, 10 minutes. How to understand the table. अब हम ये सीखने जा रहे हैं। In IELTS writing task 1, you may be asked. ये मैं highlight कर दूँ. Let me highlight it first. In IELTS writing task 1, you may be asked to describe data given in a table before you're writing. Before you start your writing, take a few minutes to read and understand the table. Think about the following.
जब टेबल आपके सामने आता है टास्क 1 में, तो आपने पढ़ने से पहले इन चीजों को देखना है कि वो पढ़ना कैसे है. Then we're gonna go ahead. Number 1, read the instructions carefully. These will tell you what the table shows. अब टेबल शो क्या कर रहा है ये जानना बहुत बहुत ज्यादा अहम है. सो आपको क्या करना है जनाब, आपने इंस्ट्रक्शंस को बड़ी केयरफुली देखना है कि टेबल के टाइटल क्या है. और द सेकंड इज ये देख लेना आपने क्या, ये मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं. डज द टेबल हैव अ टाइटल? इफ इट डज, रीड इट केयरफुली so that you know what the table is about. अगर टेबल का टाइटल है पहले, तो आपको वो जल्दी जल्दी से पढ़ना है और जरा ध्यान से भी पढ़ना है कि आपको पता चले कि टेबल है किसके बारे में. सो नंबर 3, इज द टेबल स्टैटिक और डायनामिक? अब हमें ये समझना है कि टेबल स्टैटिक है या डायनामिक है. स्टैटिक टेबल शोज डाटा एट वन पॉइंट इन टाइम. Dynamic table shows data changes over time. This will affect the language you use in your description. अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है. आप यकीन करें इस बात का, आइल्स के जो स्टूडेंट्स आइल्स पढ़ रहे हैं यहाँ या वहाँ या कहीं भी हैं, तो स्टैटिक और डायनामिक टेबल हमें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. होता ये है कि जो स्टैटिक टेबल है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन देता है, और डायनामिक टेबल जो है वो चेंजेस ओवर टाइम होता है, टाइम के साथ चेंज होता चला जाता है. बिकॉज दिस विल अफेक्ट योर लैंग्वेज यू यूज इन योर डिस्क्रिप्शन. तो ये वो जो आपने लैंग्वेज अपने यूज करनी है अपने डिस्क्रिप्शन में, ये उसके ऊपर असर डालता है, तो हमें इसका ख्याल करना है. So let's move toward the next lecture. What do the columns and rows represent? हमें ये देखना होगा कि कॉलम्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और रोज जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. We have to follow this. आपने जब when you were quite younger, you used to read the tables too, and the graphs also. We have to find out what is the information on x-axis and what is the information on y-axis. So वो जो आइडिया है ना एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन का, आसानी से इसको आप रोज और कॉलम के लिहाज से अडॉप्ट कर सकते हैं. यू कैन अडॉप्ट दैट अकॉर्डिंगली, और फिर आप उसे समझ लीजिएगा कि रोज की साइड पे क्या इंफॉर्मेशन है और कॉलम्स की साइड पे क्या इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की जा रही है. नेक्स्ट है, व्हाट यूनिट ऑफ मेजर्स डज ईच सेल रिप्रेजेंट? किलोमीटर्स, यूरोज और लीटर्स. हमें फिर ये देखना है कि वो जो यूनिट्स कौन से हैं वहां पर जो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट टाइप ऑफ यूनिट्स आर ओवर देयर. वो ईच सेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ सेल्स किलोमीटर्स को एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जांपल किलोज में, लीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, परसेंटेज की रेशियो है, क्या रेशियो है, बिकॉज वी हैव टू राइट अबाउट दैट रेशियो. हमें वो लिखना होगा अपने टेबल के साथ. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट, बी क्लियर अबाउट व्हाट द टेबल डज नॉट शो. Very, very important. Some people while writing go astray. They don't understand that what are they writing and what should they write. They really go out of the bound, and what happens in this way, they write maximum words. They feel that they have written a lot, but they have written out of focus. That was not demanded, so they get lower score. So before going to that, we have to keep all these points in our brain. So let's start the lesson here. Read this IELTS task and then decide whether the statement which follows is impossible to tell from the data. Choose true, false or impossible. So very, very interesting. It's very, very beautiful or lovely question. And if you will find it out, you will work along, then you will definitely learn a lot. So read this IELTS task and then decide whether the statements which follow are true or false, or if it is impossible to tell from the data. Choose true, false or impossible. For example, here is the table before us. Look at the table. Okay, so the table below shows how the percentage of British adults who use the internet changed over a 5 years period. Write a report for a university lecture describing the information shown below.
and percentage of adults in Great Britain who have used the internet for 3 months before being interviewed. Now अब हमारे सामने एक टेबल है और उस टेबल में कहा क्या गया है, द टेबल बिलो शोज, नीचे वाला टेबल जो बताता है, शो करता है द परसेंटेज, क्या शो कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश एडल्ट्स हु यूज द इंटरनेट चेंज ओवर अ 5 years पीरियड, जो 5 साल के पीरियड के साथ चेंज हो गई है. राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए फॉर अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर, एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए, डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन शोन बिलो, जो नीचे इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो बहुत मजे का क्वेश्चन होने जा रहा है ये, आपने बस तवज्जो देनी है, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा. परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स इन ग्रेट ब्रिटेन, फॉर एग्जाम्पल, percentage of adults in Great Britain who have used the internet for 3 months before being interviewed. This is over here. So let's talk about it. So in the table over here बताया गया है कि percentage adults की जो Great Britain में है who have used internet, जिन्होंने 3 महीने इंटरनेट यूज किया before being interviewed, इंटरव्यू होने से पहले. Now let's see on the x-axis. This is the x-axis from left to right, and this is y-axis from bottom to top. Age groups. Age group is here, is the age groups, or age group when they are the months. For example, October 2000, October 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. So age groups are 16 to 24, 25 to 44, 45 to 54, and 55 to 64. These are the age groups over here. So let's talk about this. Age group आपको साइड में मिल गए हैं, जो 16 से 24, 25 से 44 और 45 से 54 और 55 से 64 तक आपको एज ग्रुप मिले हैं. अगर हम इसको देखते हैं पढ़ने के लिए, तो आप देखिए कि 16 to 24 में आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या है, ये मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेके आते हैं. So values over ये हैं कि अक्टूबर 2000 में 70% लोग जो हैं ना उन्होंने इंटरनेट यूज किया, और 2001 में 78, 2002 में 85 और 2003 में आपके पास 88, फिर 90 और फिर 87. अब ये चेंजेस आपको नजर आ रही हैं कि 3 महीने इंटरव्यू देने से पहले उन्हें इंटरनेट यूज किया था जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उससे 3 months बिफोर. तो जब भी आपने टेबल को पढ़ना है तो आपने एक चीज का ख्याल करना है, यू विल गो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे हाथ उठाना है आपने, मैक्सिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू एंड द मिडिल वैल्यू, मैक्सिमम, मिनिमम एंड द मिडिल वैल्यू. सो 16 to 24 के लिए मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आ रही है 90, जो कि है 2004 में. इन 2004 you have the maximum value that is 90 over here. And now let's talk about the minimum value. Minimum value is 70. So it is in October 2000 and the maximum value is in October 2004. This is the maximum and this is the minimum. So in this way, the use of internet was increased with the passage of time, but after 2004 it decreased a little. Now 24 to 44, 25 to 44. In October 53% people used, and in October 2001 61, in 2002 73, 76, 79 and 81. These type of the values were over here that the people use this all for people of the age group 25 to 44 use these values. Now go for the maximum. I guess 2005 is the maximum value. So the people from the age group 25 to 44, they use maximum. 81% of the people of this age group used internet 3 months before in 2005, and the minimum value is actually 2000. 2000 was the minimum value. In October 2000 they were only 53%. Now 44 to 54, 44 to 54, this is the age group. Now you have to find the maximum value by yourself and tell me that. So the maximum value over here is 75. This is the value, and the minimum value is, I guess, 46. Again, October 2000, and the maximum value is 75. The middle value might be the 64 over here in 2003.
Now 55 to 64, the maximum value is 51 and the minimum 24. Now let's discuss something about it. If you have your cell phone in your hand, then you can use this. Also, I have taken this information from this website. I'm gonna write this website address over here. What to do is you have to take the picture of this image and then we're gonna go for the next lecture. इसकी एक तस्वीर ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी. After capturing the picture, we'll go ahead. So I guess you have taken the picture. Now I'm going to go ahead. Here we go. Questions. The table shows the number of people in Great Britain who use the internet. True, false, or impossible. Now look at this. How many people? The table shows the number of people in Great Britain who use the internet. True, false, impossible. This is true because yes, this is about the people who use the internet before interviewing. Number 2, the table shows the percentage of people in Great Britain who use the internet before July and October each year. True, false, or impossible. Before July and October. There's no July over here, so this is false. So next, the table. So next, the table shows changes over time. The table shows changes over time is dynamic, or for example, true, false, or impossible. Yes, it is explaining the table changes over time, so it is dynamic. True. So number 4, in October 2000, more 16 to 24 years old use the internet than 25 to 44 years old. True, false, or impossible. October 2000, more 16 to 24 years old use the internet than 25 to 64 years old. ये true है, ये false है कि 2000 में, अक्टूबर 2000 में 16 से 24 साल के लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते रहे हैं 25 साल से 44 साल के लोगों की निस्बत. तो true है कि false है. यहाँ देखिए, yes, ये 16 to 24 70 है और 25 to 44 50 है. Yes, of course. तो ये आ गया true. तो next है, the lowest percentage of internet use is with the 55 to 64 years old. Lowest इन्होंने यूज़ की है 55 to 64. देखिए अक्टूबर में भी lowest है, और अगर आप अक्टूबर 2001 में जाते हैं तब भी lowest है, तो इनकी वैल्यू lowest ही आ रही है. तो ये आ गया आपके पास true. आगे चलते हैं. Here we go. The percentage, okay. In October 2004, only 48, means 55 to 64 years old, use the internet. 2004 में 55 से 64 साल के जो ओल्ड थे, बूढ़े थे, यूज द इंटरनेट. उन्होंने इंटरनेट को यूज किया. ये ट्रू है, फॉल्स है कि इम्पॉसिबल है. चलें ढूंढते हैं कि अक्टूबर 2004 किधर आ गया है आपके पास. ये यहाँ पे है और नीचे है जी. इन अक्टूबर 2004 ओनली 48 50 to 64 years old use the internet. सिर्फ 48 लोगों ने 2004 में 55 to 68 ग्रुप में यूज किया. यस, बिल्कुल सही है. ये देखिए ना, यहाँ पर 48 आपको उसने इस तरह से दिया है लैंग्वेज फॉर्म में, और यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको दिया है. तो फिर इसलिए है ताकि आप थोड़ा डिफिकल्ट फील करें. सो Number 7, 10% of 16 to 24 years old didn't use the internet in October 2004. अब ये इसके ऊपर दिया नहीं हुआ, impossible, कि इसके ऊपर ये मौजूद नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, impossible. Number 8, the percentage of people in Great Britain who use the internet increased over the 5 years of time. True, false, or impossible.
5 साल के इस दौरान में ये बढ़ा है, इसका यूज ये कम हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हाँ जी, ये 5 साल के में बढ़ा है। कैसे? ये देखिए 1624 2000 में 70% था और 2005 में वो 87% आ गया। 25 to 44 था 55% और 2005 में वो 81% पे चला गया। और 45 to 54 वो 46% था 2000 में और वो एंड के ऊपर 75% पर चला गया। और 55 to 64 वाला था वो 24 था और 51 पे चला गया। It means it is also true. Yes, very good work. Let's move ahead. British Council Learned English Professionals. This is next lecture. Activity 3. Ways of expressing numbers. 5 minutes. ये 5 minutes की exercise है जिसमें हम express करेंगे numbers को express करना हम लोग सीख रहे होंगे। ठीक है? तो आपने इसमें हमारे साथ देना है कि आपको ये कैसे है। So here we're gonna go. Thank you very much. Rana Abdullah is there. Chaudhry Ali is there. So there is also Sayyid Kamran Ali and Dawood Ansari or Ijaz Wakar. Thank you very much, Sir Ijaz. Thank you very much. It's my pleasure that you are listening me over there. आप तो हमारे बादशाह हैं, आपकी तो क्या बात है, आपने तो बोलना सिखाया है सर। Congratulations or salutes for you. So I'm gonna go ahead. Activity 3. Ways of expressing numbers. 5 minutes. There are a number of different ways of expressing the same figure in English. For example, we can say a half, 1 and 2, or 50%, and they all mean the same. It's a good idea to vary the way you express figures in your description of the table or chart. देखिए आप जब आप IELTS लिख रहे हो, IELTS में राइटिंग टास्क 1 कर रहे होते हैं तो आपने वर्ड्स को रिपीट करने से गुरेज करना है। जब आप वर्ड को रिपीट करने से गुरेज करेंगे तो एक ही बात को करने के लिए आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होने चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट मल्टीपल वर्ड्स हमें क्या करना है, हमें अपने आप के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करनी है कि हम एक ही बात को दूसरे तरीके से कह सकें। जैसे कि अब हम सीख रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ, ये मुझे हाईलाइट करने दें फर्स्ट। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम फिगर इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक ही फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से अ हाफ, हम कह सकते हैं अ हाफ। वी कैन से 1 and 2 और 50%। अब हाफ भी वही चीज है, 1 and 2 भी सेम है और 50% भी सेम है। अब तीनों चीजें एक ही चीज को डिनोमिनेट कर रही हैं and they all mean the same. It's good idea to vary the way you express figures in your IELTS, in your description of the table or chart. आप figures change करते हैं अपने description में, ये बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त चीज़ है। All the phrases below can be used to describe figures. Group them into phrases which means the same. For example, a fifth. ये इसके ग्रुप बनाने हैं जो मेरे पास यहाँ पर ग्रुप्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सुबह 9 to 11 ग्रुप है, 11 to 1, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 8। और ये लेसन मैं सुबह 9 to 11 के ग्रुप्स को पढ़ा चुका हूँ। लास्ट डे उन्होंने पढ़ा था, तो आई हैव टोल्ड देम दैट आई विल रिपीट द लेक्चर एट संडे। सो अ फिफ्थ को आप कौन सा और नीचे नजर आ रहा है जिससे आप चेंज कर सकते हैं जी। अब फिफ्थ को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 and 5 से। यस, प्लीज साथ दीजिएगा, 1 and 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। और नीचे आइए, ट्वेंटी % भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, अब फिफ्थ हिस्सा ना इसका। सो दूसरा देखिए, अ क्वार्टर अगर आपने एक दफा लिख दिया, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपने IELTS की राइटिंग में एक दफा लिखा है वर्ड अ क्वार्टर, तो नेक्स्ट टाइम आप अ क्वार्टर लिखने की बजाय दोबारा आपको लिखना पड़ता है, तो देन यू हैव टू राइट 1 and 4। आपको दोबारा लिखना चाहिए 1 and 4, या फिर आप इसको फिर नहीं लिखना चाहते तो आप फिर नीचे और आ जाए। देखें जरा क्या बनाते हैं, 1 and 4 को और किससे रिप्लेस करते हैं। जी मुझे मैं चाह रहा हूँ मुझे आवाज़ आए या आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे नज़र आनी चाहिए कि आप इसमें
किसको आप शामिल कर रहे हैं? 1 in 4 के बाद क्या होगा? चलिए आप कर लीजिएगा। अ टेंथ को आप रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस अ टेंथ विद व्हाट? लेट मी एक्सप्लेन। अ टेंथ कैन बी रिप्लेस्ड विद 1 in 10। 1 in 10 से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट आते हैं अ थर्ड। अ थर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? देखिए, %, 25% और 3/4 अ थर्ड। 3/4 हो सकता है, ठीक है। 3 out of 4 10% किससे हो सकता है ये देख लीजिए। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इनकी आप एक पिक्चर बना लें तो द पिक्चर विल डेफिनेटली हेल्प यू कि हाउ टू रिप्लेस दीज वर्ड्स विद अदर वर्ड्स। सो टेक इट एज योर होमवर्क। Just over 60%. So if you talk about just over 60%, what can you say in other words? So please follow me and tell me about that. So 10%, 3 out of 4, 60% को हमने represent करना है। 3/4 हो सकता है, yes of course। 20% हो सकता है, no। 2 out of 3, yes। 60% ये भी हो सकता है, 2/3, yes। ओके, सो इस तरह से ये सारे के सारे जो आप इसकी पिक्चर बनाएं ताकि ये सारे के सारे आपके नेक्स्ट टाइम रिपीट में काम आ सकें। Here we gonna go number 4, ways of expressing numbers 10 minutes. Now look again at the table about internet usage from activity 2. Use expressions from activity 3 to complete these sentences about the table. Remember to use a variety of ways to describe the figures. अब इसको पढ़ने के लिए, हल करने के लिए पीछे में थोड़ा सा जाना होगा। जो आप पहले 7 पिक्चर्स बना रहे हैं उनको यूज करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। For example, 16 to 20 years old had the greatest internet usage in 2004. For example, dash out of 10 people in this group use the internet. अब हमने sorry for that. इसको सीखने के लिए हमने क्या किया है? 16 से 26 का जो एज ग्रुप है इसके बारे में years old had the greatest internet usage. इसका सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजेज हुआ है 2004 में। फॉर एग्जाम्पल, डैश आउट ऑफ 10 में से इतने पीपल इन दिस एज ग्रुप यूज द इंटरनेट। अब 10 में से कितने लोगों ने यूज किया होगा ये हमें गेस करना है। उसकी दूसरी तरह से 16 to 24 की तरफ चलते हैं। 2004 में, here we go, 2004 ये आ गया। 16 to 24 is over here, so 90 को हम 90% को हम दूसरी तरह से यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ये बन जाएगा, ये 1900 में से 90 है तो 9 out of 10, so we'll write over here, now come down, for example 9 out of 10, वहां पे 90% था तो वो फिर 9 हो गया 10 में से। People in this age group use the internet. In 2001, just over dash of 25 to 44 years old, अब हमने जाना है 2001 में over, just over, किसी एक रकम से ऊपर हमने कोई परसेंट वैल्यू से ऊपर हमने यहाँ पे लिखना है कि of 25 to 44 years old use the internet. 2 years later the figure was just over dash. अब 2 साल बाद फिगर किससे ऊपर गई थी ये देखेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 to 44 और 2001 और 2 years आफ्टर क्या बनता है वो भी देखेंगे। 2001 ये 60 है तो जस्ट ओवर 60% वहां पर आ जाएगा। और 2 साल बाद 1 2 और उसके बाद क्या लिखा था, लेट्स गो,
2 years later, 2 साल बाद, the figure was just over this. अब 2 साल बाद, in 2001, you have to add 2. If you add 2 in 2001, then it becomes 2001, 2, and 3. It becomes 2003. It is for your calculation. Let's discuss about it. So 2003, just over 70%. Just over 70% in 2003. You write that over there. Just over 70%. Okay, fine. Go back. Actually, I was staggering sometime between this. Now, the next age group is for 45 to 54 age group. Internet usage rose from just under dash in 2000 to 5 in 2005. अब ये दो जगह पे हमने ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 से 3 दफा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. For the 45 to 44 years age group, इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट का जो यूज था 45 से 54 साल के लोगों के लिए from just under, वो किसी से नीचे था in 2000 में, और in 2005 और 2005 में वो बढ़ गया. अब हम 45 to 54 का एज ग्रुप देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या हुआ था. रोज फ्रॉम जस्ट अंडर दिस, 2000 में इससे कम होके 2005, तो हमने फिगर 2000 और 2005 की तरफ गौर करना है. गो बैक. सो ओवर हियर 45 to 54, 2000 में था जस्ट अंडर 50% और 2005 में चला गया कहाँ पे, ओवर 70%. तो ये देखें ओवर 75% था, तो ओवर 70%, और ये जस्ट अंडर 50%. ये 46 है तो 50% के अंडर कर लेंगे, और 75 है तो 70% से ऊपर कर लेंगे, या फिर अगर आप अंडर यहाँ पे लिखा है तो फिर अंडर करके उसको लेके चल पड़ेंगे. बहुत आसान है. So let's move on, bravo, move on. In 2000, only one in dash 55 to 64 years old use the internet. Only one in dash. अब हमें ये ढूंढना है. 2000 में 55 to 64, the figure had risen to over dash by 2005. Figure बढ़ गई. In 2000 में कितनी figure कम हुई थी, ये भी हम देखेंगे. In 2004, yes, talk about it. One in dash. अब 2000 में देखें 24 है, तो 2400 का अगर जाए तो ये उसका बन गया, कितने परसेंट बन गया, 25 होते हैं ना 4%, तो आप वो कहेंगे जस्ट 4 in 100. ओके, जस्ट 1/4 in 100 यूज, और 51 में क्या 0.5% बन गया, half. तो then over here you can say this in the way, the figure had risen to over 50%. देखिए वहां पर वो 51 बना था तो over 50% हो गया. only one in 100 आप कर सकते हैं, और उधर उसको ऊपर लेके जा सकते हैं. So this is the question here. Let's move on. This is the activity 5. I do want to check how many people are participating in this lecture. Let me see. Okay, I'm watching the picture of Rana Abdullah's message was over here, and Chaudhry Ali is the top contributor to today's lecture. Rana Abdullah is also, yes. Rana Abdullah, thank you very much for participating. You are really proving yourself as a nice candidate who is getting maximum benefit. So I love it. So Rana Abdullah, congratulations for you, and Rana Abdullah and Chaudhry Ali, you are the best students in today's lecture. So move on.
Activity 5, using quantifiers, is 5 minutes activity. How to use the quantifiers? What are the quantifiers? हमें ये देखना है कि quantifiers होते क्या है ना IELTS के writing task 1 में. In part 1 of the IELTS writing test, you may have to describe amounts. You will need to be careful using quantifiers, जैसे words like much, many, some, etc. Put the words and expression below in the correct group. नीचे हमारे पास ग्रुप आएगा, करेक्ट ग्रुप, उसके अंदर हमने इसको लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, a large amount, a little, a lot of. पहले मैं आपको दोबारा से उर्दू में बता दूं कि in part 1 of the writing task you may have to describe amounts. Part 1 में हो सकता है कि आपको amounts describe करनी पड़े. You will need to be careful using quantifiers, and you have to be very careful about using quantifiers. Words like much, ऐसे अल्फाज जैसे कि much, many, more आपके साथ मौजूद होते हैं और इसका भी आपने ख्याल करना है. Put the words and expressions below into the correct group. नीचे हम आपको ग्रुप बताएंगे, उन ग्रुप के लिहाज से आपने उसको करेक्ट ग्रुप में लेकर जाना है और लिखना है. वर्ड्स को देख लें. a large amount, a little, a lot of, a small number, a small amount, a few, fewer, fewer and fewer, less, less and less, many, more, most, much, no, none of, several, the majority of. These are the words जो आपको यहाँ पर मिलेंगे और आगे चलते हैं. अब यहाँ पर आ गई इसकी क्लास. बहुत ही मजे का लेक्चर. It's very useful. Used with countable nouns, used with uncountable nouns, used with both countable and uncountable nouns. Here we are saying men. So men, women, cars and hours. इनके साथ हम क्या लगाएंगे ये हमें देखना है. men के साथ क्या आएगा? जैसे क्या ऐसा हो सकता है large amount of men? नहीं हो सकता. A little men, a lot of men, yes, it can be over here. A lot of men, a lot of women, a number of cars. cars के साथ क्या आएगा? number of cars. अब आप ऐसा करें सबके सब, इस लेसन की एक पिक्चर बना लीजिए प्लीज, ताकि मैं फिर थोड़ा सा आपको आगे लेके चल सकूं. यहाँ तक आप ले आए पहले, इसकी एक पिक्चर. मेक अ पिक्चर ऑफ द स्लाइड बिफोर यू, देन विल गो अहेड. I guess you have made and you have taken the screenshot over here now. Make it the screenshot. Now move on. Over here, men, cars, time. Then you can say about the money. For example, what will you use with the time? A lot of time. You will use a lot of money. Much time. Time के साथ आप लगाओगे. Lot of time तो नहीं लगाओगे. फिर आप इसके साथ लगाओगे much time or few time, of much money, water, a lot of water. इस तरह कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी नाउन लग जाते हैं. तो ये टेबल आपने बनाना है नीचे अपने पास. ये टेबल बना लीजिए अपनी कॉपी पे, या फिर इसकी पिक्चर ले लें और जब आप नोट्स बना रहे हो तो इसको उसके ऊपर बना लीजिएगा. और आफ्टर दैट फिर अब करेंगे ये कि इसको हम फिर आप फिर घर से इसको करके लाएंगे और मुझे नीचे जो मैं YouTube के ऊपर ये वीडियो लगाऊंगा, देन यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस एंड आई विल कम्युनिकेट ओवर देयर. सो नाउ एक्टिविटी 6, यूजिंग क्वांटिफायर्स. 10 minutes. ये 10 minutes का एक लेक्चर है, इसमें हमने quantifiers यूज करने हैं. और quantifiers क्या होते हैं? Keep in mind these lectures are very important lectures for the students who are really interested to get band 8 in IELTS writing skill. So if you are interested, then you have to follow this in a very good way. This is the activity 6. In activity 6, using quantifiers in 10 minutes. So the table below show how men and women, the table below show how men and women spend their time each day. It is static table, that is, it doesn't show changes over time, but compares values at one point in time.
अच्छा, ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है 10 मिनट की एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं, इसमें आपको एक टेबल मिलेगा. द टेबल बिलो शो द हाउ मेन एंड वुमेन स्पेंड देयर टाइम इन ईच डे, कि कैसे मर्द और वुमेन, मेन और वुमेन जो है, मर्द और औरतें अपना दिन का वक्त गुजारते हैं. इट इज स्टैटिक टेबल, ये एक स्टैटिक टेबल है एंड इट डजंट शो चेंजेस ओवर टाइम. अब स्टैटिक टेबल की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ टाइम के साथ. सो द ब्लैक फिगर्स शो द टाइम स्पेंट इन मिनट्स. जो ब्लैक फिगर यहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें टाइम मिनट्स में शो हो रहा है. द ब्लू फिगर्स शो द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल आस्क्ड हु सेड दैट दे डू दीज एक्टिविटीज. और फिर वो जो ब्लू बताएंगे वो जो जिन्होंने एक्चुअल में एक्टिविटी की है. Now look at the table and complete the description by choosing the best word or phrase for each gap. Time spent by adults over 16 on daily activities. It's very useful lecture. आप के पास IELTS में जब टेबल राइटिंग के ऊपर टास्क 1 में टेबल आता है तो वो किस तरह का टेबल होता है और कैसे आपने उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है बैंड 9 की फाइट करने के लिए, ये लेक्चर उन खास लोगों के लिए बहुत अहम है. So here we gonna go. Next. टेबल का चेहरा देखें अगर आप, द टाइम स्पेंट बाय एडल्ट्स, जो वक्त गुजारा है 16 साल के ऊपर लोगों ने डेली एक्टिविटीज में, वो कैसे है. तो एक्टिविटी लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, हियर द एक्टिविटी, और इन द सेंटर द मेन, वुमेन एंड ऑल, एंड सो टोटल इंटरव्यूड 100 पीपल एंड वुमेन टोटल इंटरव्यूड 100. So if you talk about the sleep, then average minutes per day will be shown in black, and number of people participating in the activity is shown by the blue color. Sleep. If you talk about the sleep, mean activity is sleep. And when they ask this question from men, and they ask 100 men about the sleeping question, and they said that the total time was 5:03. That they were sleeping for 503 minutes per day, right? So when they asked this from the 100 women, and their answer, the collective answer was 513. So the women were using more than the men. And then we talk about the total was 508. So the answer was 508. So what you do is the personal care, that is wash and dress. 97 people were asked about their daily cleanliness, that whether they wash their hands or wash their dress daily. So when they asked this question from 97 people, and the men, the 41 minutes they are spending daily on washing their dresses or the personal care. But the ratio of the women were more. It was asked from 98 women, and the answer was 52. It was much better than the women. So they all were the 47 people. Housework. We're talking about the housework now. 85% people were asked about the housework, and they said, men said that they spend 126 minutes for housework, and while the women who were asked 96, and they said that they are spending 215 minutes for the housework, and it was calculated between 173. Entertainment and culture. It means that 5 people were asked in the men, they spent 6 minutes for entertainment, and 6 were for the women. So these are the values are present underneath. Here we're gonna go over here. So the link is over here for the lecture. You can go for this link, statistics.government.uk, copyright.asp. So I'm gonna go over there and you can find the actual thing. This is actually the table. You people have to read it, and you must solve it on your notebook. Over 3:59, 1 hour has spent on the lecture, and we have reached here. So what to do is kindly read it and try to follow this. Let's discuss. The table shows how much or many time. What should I write? How much time should be. Many time तो नहीं होता, much time होता है, तो आना चाहिए how much time
people spend on certain daily activities. Not surprisingly, everybody surveyed spent a lot of or many times, a lot of time sleeping. तो many कट जाएगा, a lot of हम यहाँ पे लिख देंगे. However, men spend slightly less time sleeping than women did. अब slightly fewer time तो नहीं होता ना, time के साथ fewer तो नहीं लग सकता, less time आएगा. After sleeping, the next most time consuming activity was housework, taking up 175 minutes per day on average. Again, though, there was a marked difference between men and women, with women spending much more minutes, many more minutes. Minutes आ गया, many के साथ ये countable noun आएगा, तो many more minutes per day on this activity than men. In addition, a greater number of women, a greater amount of women तो कभी नहीं हो सकता. It is impossible. We cannot write amount of women. Amount is something for the money is used. So a greater number of women than men reported that they spent time on housework for child care. In contrast, men spend a greater amount or number of time on their hobbies. A great number of times, a great amount of time on their hobbies and games than women did. Very dash people, very many to hold sector, very few people surveyed spent much free time on entertainment and culture. For the dash of people, free time was spent watching television. For majority of people या minority of people, अब इसको जाके हम देखते हैं क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया था. So let's move back. So majority over here is 161, 137, 148. So the majority might be the majority over here. For the majority of people, free time was spent watching television. Almost 9 out of 10 people reported that they spent hours watching TV. A lot of hours spent, many or lot of hours. अगर hours आ गया है तो फिर आप several hours आ जाएंगे. Spent several hours watching TV every day. So you can make the picture of this slide and you can rewrite it. ये वो कैलिबर और लेवल है जो आपके अंदर होना चाहिए है IELTS के हवाले से. फिर आपको समझ आती है कि IELTS की राइटिंग की शक्ल क्या बनेगी. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है एक्टिविटी 7. एग्जाम्पल टास्क 1, 10 minutes. Look at the example task 1 question below and then try to complete the sample answer using language we have looked at so far in this lesson. The table below shows the prevalence of smoking amongst adults in Great Britain. Write a report for a university lecture describing the information shown below. Cigarette smoking status by age and gender. अब हमें यहाँ पर अगले लेक्चर में सिगरेट कैसे स्मोकिंग होनी है उसके बारे में एक लेक्चर मिल रहा है. आप इसे ये 4 और 3 डायल पर हो गए हैं. आप इसे अगर 3 से 5-4 मिनट में पढ़ लेते हैं तो देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग.
And thank you very much, Junaid, that you just given me the message that you like my method or today's lecture. Actually, I told my friends last day and my students that I'll try to come online over here so that everyone can learn and earn bands. Here we're gonna go. The table below shows the prevalence of smoking among us adults in Great Britain. Write a report for the university lecturer describing the information shown below. Cigarette smoking status by age and gender. Here we're gonna go talk about what the cigarette is and how the cigarette is working and how many people are smoking over there. Here is a lecture. Actually, lecture runs away. I don't know why, but it runs. Men. If we talk about the men, cigarette smoking status by age and gender, very useful information it is we have. So men 16 to 19 years of age group men, 19 were among of 19% of the population were light smoker, and the heavy smoker were 4%, and overall the smoker 23%. It means 23% of 16 to 19 years old age group was actually the smokers, but the heavy smokers were just 4% and 19% were the light smoker. Let's talk about 20 to 24% of the people. If we just talk it in a serious way, then 20 to 24%, 32% were actually light smokers. On the other hand, 5% were actually heavy smoker, and 36% overall were the smokers. Now the maximum value is actually 36 over here. So we have to go for the maximum and the minimum values, and all the in between will be just the form filling. Anyway, we have to read it from 25 to 34, 26, 19, and 35, and 45 to 49, 18, 12, and 31, and from 50 to 59, 13, and 12, and 24, and 16 over. The 10% were light smokers, 5% were heavy smoker, and 15% were all smokers. And now let's talk about the maximum values. The 50 to 59 was 12 people were the heavy smokers, and in 30 to 35 the maximum value was actually 18, and then 12 and 31. Women 18 to 16 to 19 age group, the women who were from 16 to 19 years age group, they were total 25% were actually smokers, and 24% were light smoker, and 1% were heavy smoker. 20 to 24, 25, 5%, 5 and 29, and 25 to 34, 22, 6 and 28, and 35 to 49, 19, 9 and 28, and 50 to 59, 14, 8 and 22, and 16 over 10, 4 and 41, 1, 14. So this is actually the a chart before us. This is a table. You have to make a picture of the table, then we're going to go. Yes, it is something very special. A little challenging, but a very beautiful. What to do is we have to write something by looking at the tables. Now please make a picture of the table again, then we'll go down and we'll try to complete that there. These exercises are actually really enhancing your capacity and capability to write and read or do whatever you like to do about your career. Actually, in IELTS career, I tell my students that you have to focus for 2 months and the whole life will be beautiful. For example, if you're gonna go and if you get the chance to go UK or Canada or Australia and you set yourself in your life there, then your family will become very settled. The table shows dash and compares the prevalence of smoking dash. The table shows, now over here what we have to think what the table shows. Now let's move towards the table. What does the table show? So the answer is over here. The table shows the prevalence of smoking amongst adults in Great Britain.
this should be written over there. This should be written over here. The table shows the prevalence of whatever was there and compares the prevalence of smoking among the adults. Now let's talk about adults in Great Britain. We have to write the adults in Great Britain amongst the IELTS. Prevalence of smoking prevalence of smoking amongst the adults of the Great Britain. It is clear from the figure that smoking is most common where most common among men and women. Most common among men, most common among men and women. Nearly dash men are exactly and women are light smokers. So yes, this is the saying. Nearly dash percentage men and exactly dash percentage of women are light smokers at this age. So now what to do is, you can figures that smoking is most common. कहाँ पर smoking most common नजर आ रही है आपको? देखें जरा, ये maximum value 36% है, 20 to 24% people, 32 है और 36, और इधर भी 22 to 24 ही maximum value जा रही है. तो फिर मैं कहाँ पे है वो 20 to 24% of the people. We'll write over here most common among 20 to 24 people age group. Nearly dash men and exactly nearly dash कितने men nearly, अब ऊपर देखिए, we are talking about the light smokers. So अब देखिए nearly 30%, ये 32 है, इसकी बजाय हमने वो 30 पर लिख देना है. Nearly 30% of men and exactly, अब यहाँ पर exactly के साथ ही 25% आ जाएगा, and exactly 25% of women are light smokers at this age, while dash are heavy smokers. While, अब while के बाद 5% women में नजर आ रहा है आपको, ऊपर देखें प्लीज, ये 5% आपको men में नजर आ रहा है ये, और 5% ये आपको women में नजर आ रहा है. इट मीन यहाँ पर हम ये लिखेंगे, we'll write over here, while 5% of them are heavy smokers. The figures also show that as age increases, जैसे ही age बढ़ती है तो होता, ओह ये कहाँ चला गया, it really disturbs me whenever it comes. अब आप बाकी खुद क्यों नहीं करते, ताकि आपका अपना ज़हन भी थोड़ा सा चले. तो आप नीचे फिर वो मैं कमेंट्स में वेट कर रहा हूँ, आप बताइए कि आपका ज़हन क्या कहता है, what do you think, what will be your answers about it, and you can participate. Otherwise मैं ही बोलते चला जाऊँगा तो फिर पार्टिसिपेशन का तो मज़ा नहीं आ रहा होगा. So what to do is you have to participate by yourself too. यहाँ पे कुछ बेहतर है. So what to do there? What to do is find it out here. The figure also shows that as age increases, the smoking percentage increases also. This trend is true for dash. ये trend किन के लिए true है? This trend is true for all smokers, for men and women, दोनों के लिए true है. The most
The most disturbing figures are those for 16 to 19 years old. Around dash 16 to 19 years old, around dash of them are heavy smokers. Around, अब देखना है कि around कितने उसके जो heavy smokers हैं 16 to 19. Now look at it, 25% and 23. So around 25% of them are the regular smokers. The percentage of girls in this age group. Percentage of girls in this age group are 25% in this age group. But it seems that teenage boys, अब it's because teenage boys जो हैं वो क्या हैं? Let's talk about. Now teenage boys 18 to 19, they are 19%, and 16 to 19 women, they're 24%, the 4 and the less 4. But the teenage boys are more heavy smokers than women. You can write over here. Teenage boys are more heavy smokers than the women of the same group. So activity 5, brainstorming, IELTS writing task 2. This is now lecture. Very, very important and very beautiful lecture for all the students who are over there. So IELTS writing task 2, problem and solution. There are the numerous types of the essays over there. There might be the problem and solution essay. There might be the opinion essay, or the third type of essay, discursive composition essay, or the suggestions essay. First of all, activity 8, brainstorming ideas, 5 minutes. In part 2 of the IELTS test, you may be asked to write a composition discussing the causes of problem and suggestion possible solutions. Here is an example. In part 2 of the IELTS test, you may be asked to write a composition on discussing the cause and effect problem and suggesting possible solutions. Here is an example. For example, present a written argument or case to an educated reader with no special knowledge of the following topic. ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपने लिखना है, और एक ऐसे रीडर के लिए जिसके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है. तो excuse me for this, टॉपिक है कि overfishing of the world's oceans threatens many species with extinctions and is putting the livelihood of millions of people around the world at risk. What are the causes of this problem and what can be done to prevent it from happening? Overfishing of the world's oceans threatens many species. जो वर्ल्ड में ओवरफिशिंग हो रही है समुद्रों में, वो थ्रेट कर रही है कुछ स्पीशीज को विद एक्सटिंक्शन, कि वो सफाई हस्ती से खत्म हो जाएंगी. एंड इज पुटिंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड एट रिस्क. अगर वो सफाई हस्ती से खत्म हो जाती हैं तो बहुत से जो लोग हैं उनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो इसी पे है, तो वो भी रिस्क पे चली जाती है. व्हाट आर द कॉजेस क्या है of this problem, इस प्रॉब्लम की, and what can be done to prevent it from happening. और हम क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए. अब whenever you get this type of a question, what to do is you have to read the question 3 times. This is my suggestions for you. Read the question for 3 times, then your brain will start giving you some special and superfluous ideas, and after that you can write a very great essay. Otherwise it might be difficult to cope or to cater all the postulates. You should use your own ideas, knowledge and experience and support your arguments with examples that relevant evidence. Okay. Before you begin writing, spend few minutes to think on the ideas with the topic. And this stage, don't get worried much about how you are going to express or organize these ideas. Just brainstorm the topic and jot down the notes.
जब आप को टॉपिक मिलता है तो आप थोड़ा सा टाइम अपना सोचने के ऊपर लगाएं और इस आइडिया को बना लें। बनाने के बाद फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके में आप कुछ आइडियाज़ को बना लीजिए, फिर एक्सप्लेन कीजिए। अगर हम यहाँ पर आइडियाज़ बनाते हैं, दो चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं देख पाते, तो होता क्या है कि वो एक सवाल के एक हिस्से का आंसर दे चुके होते हैं, दूसरे हिस्से का आंसर वो नहीं दे पाते, जो कि बहुत बहुत खतरनाक काम होता है। और अगर आपने आधा ऐसे ही नहीं लिखा तो फिर तो आप आधे नंबर तो और आधे जो ग्रेड्स हैं वैसे ही छोड़ देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग ग्रेड्स हैं उनमें से आपका जो है वो बैंड बनेगा, और वो बैंड बनेगा ना, क्या बैंड बच जाएगा। So spend 3 minutes about the brainstorming ideas. Example the questions above. Causes of overfishing क्या है और ways to prevent overfishing क्या है। हमें देखना है कि ये जो ओवरफिशिंग हो रही है इसकी वजूहात क्या है और इसे प्रिवेंट करने के क्या वेज हैं। आप चाहें तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें। स्टॉप करने के बाद आप इस वीडियो को ये पहले अपने नोटबुक के ऊपर आइडियाज बना लें, फिर आप इस वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। मगर मैं स्टॉप कर नहीं पाऊंगा, मैं आगे चलूंगा। कुछ आइडियाज जो हमने आपके लिए बनाए हैं वो कौन से हैं। अगर मैं ये आइडियाज आपके सामने डिस्कस करूं तो आप इतनी मदद कर लीजिए, यू हैव टू जस्ट क्लासिफाई द आइडियाज दैट वेदर दे आर फॉर द कॉज ऑफ ओवरफिशिंग और वेदर दे आर वेज टू प्रिवेंट ओवरफिशिंग। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, फैक्ट्री फिशिंग मेक्स ह्यूज कैचेस टू इजी। ये जो फैक्ट्री फिशिंग आ गई है इसने ह्यूज कैचेस टू इजी, मतलब बहुत बड़े बड़े शिकार आसान कर दिए। तो क्या किस में आएगा ये, वेज टू प्रिवेंट ओवरफिशिंग और विच विल बी इन द कॉजेज ऑफ ओवरफिशिंग? आई थिंक इट विल बी इन द कॉजेज ऑफ ओवरफिशिंग, क्योंकि यही वजह बनेगी ओवरफिशिंग की कि वो आसान हो गया है तो लोग जाकर ओवरफिशिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग इन लॉज टू प्रोटेक्ट फिश स्पीशीज एंड लिमिट फिशिंग। कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि फिशिंग जो है वो लिमिट हो जाए, उसके ऊपर लिमिट लगे, मछली पकड़ने के कानून बनाए जाएं। तो ये वेज टू प्रिवेंट ओवरफिशिंग में आ जाएगा। अगला आइडिया जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो आपके पास है, क्रिएट एन इंटरनेशनल बॉडी टू पुलिस द ओशंस एंड इन्फोर्स लॉज। आइडिया ये है कि कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि इन्फोर्स करे लॉज को और फिर उसे यहाँ पर लगा सके। तो फिर ये वेज टू प्रिवेंट ओवरफिशिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिशिंग प्रोवाइड्स अ क्विक रिटर्न फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। फिशिंग जो है वो क्विक रिस्पांस देती है तो कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को, तो लोग जाहिर है अगर बहुत ज़्यादा रिस्पांस देगी तो लोग ज़्यादा जाएंगे फिशिंग करने, तो फिर ये कॉज ऑफ ओवरफिशिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनवायरमेंटल लॉज। तो ये भी आ गया कॉजेज ऑफ ओवरफिशिंग में। इलीगल फिशिंग इज डिफिकल्ट टू पुलिस। यस, इलीगल फिशिंग जो है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुलिस, तो ये भी आपके पास आ गया कॉजेज ऑफ ओवरफिशिंग में। पुट टैक्सेस ऑन फिशिंग व्हिच मेक्स इट लेस अट्रैक्टिव टू कंपनीज। कुछ टैक्सेस लगा दिए जाएं ताकि कंपनीज के लिए फिशिंग लेस अट्रैक्टिव हो जाए, तो ये फिर ways to prevent overfishing में आएगा। Now next is raise public awareness about the through the media। Okay, awareness through the media बढ़ानी चाहिए होगी और ये इससे क्या होगा, ये ways to prevent में आ जाएगा। Next है the problem does not get enough publicity। ये जो problem है इसकी बहुत ज़्यादा publicity नहीं हुई, तो फिर what do you think, which will be the causes of overfishing or which will be the way to prevent overfishing? It will be the causes. It will come over here, the causes. Next, there is a growth demand for fish worldwide। ग्रोइंग डिमांड है वर्ल्ड वाइड फिश की, तो जाहिर है फिर अगर डिमांड ग्रो कर रही है तो फिर कॉज हो है, तो बैन द फिशिंग ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ फिश। तो अगर कुछ फिशेस को बैन करेंगे तब भी वेज टू प्रिवेंट ऑफ ओवरफिशिंग में आ जाएगा। सो दिस इज actually the classification of ideas. If you have many ideas, then you have to classify that in the two ways, because we have to write on the two topics, ways and this. Now activity 10, very 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 useful activity.
In activity 10, you will use the expressing cause and effect method. We'll use the 10 minutes for that. Now keep in mind, this is the lecture for the students who are really serious to get band 9 in IELTS writing. So they have to follow the lesson. Activity 10, expressing causes and effects. It is a 10 minutes lecture. If you are asked to discuss a problem and a possible solution in task 2, you will need to be able to outline the causes of the problem and show what effects have these or these have. Here are some useful expressions for doing this. Here we're gonna go. Results is, पहले रिजल्ट आ गया, फिर इज और फिर कॉज. ये रिजल्ट और कॉज की एक टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है अच्छे ग्रेड्स देने के लिए. अगर आप पहले रिजल्ट लिखें और बाद में कॉज लिखें तो आपको ये मेथड यूज करना होगा. दिस रिजल्ट इज ड्यू टू दिस कॉज. फॉर एग्जांपल, the result is due to this cause, the result is owing to this cause, the result is because of this cause, this result is caused by this cause, this result is brought about by this cause, the result on account of this cause, as a result of this cause. Cause और result के method पे कैसे होगा? Cause results in this result, this cause results causes this result, this cause gives rise to this result, this cause leads to this result, this cause brings about this result, this cause accounts for this result. So this is a result and cause and result method. In the next lecture, we'll try to start and explain this so that you will be able to write something or the read on a professional level. So make a picture of this activity, and inshallah tomorrow we'll start from here. Now take good care of yourself. Let me see who were the participants and who have participated in the lecture. Thank you. Rana Abdullah, Musaddiqa Amina, happy to see you live, sir. Thank you. And Rana Abdullah, causes, yes. Rana Abdullah, prevent, yes, you are right. So Abdullah and Musaddiqa, yes, Musaddiqa Amna and Junaid, thank you. Chaudhry, thank you. Thank you for all, and thank you very much that you have participated in today's lecture. So take a lot and great care of yourself. For on-campus classes, you can join my institute here named English Council in Faisalabad, and we are providing guarantee classes for life skill, for Duolingo, and for IELTS also. So, Assalamu alaikum, have a great life. Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.